As a Shaheenian graduate, we don't expect you to go and पेट पालना हमारा काम हरगिज नहीं है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, पेट पालना अल्लाह का काम है। हम एक मकसद के पीछे जाएं, हम उस दुनिया से अलग हो जाएं जिस दुनिया में सैलरी कितनी, पैसे कितने, कार कौन सी, गाड़ी कौन सी, घर कौन सी, वॉच कौन सी, फोन कौन सा। Get away from that। शाहीन ऐसा काम नहीं करता है। जो डॉक्टरी करते हैं मगर साथ में दूसरा काम भी करते हैं। We don't need those kind of doctors. We need honest doctors who are God-fearing and who have love and compassion and respect in their hearts. And respected members of the audience, I would really greet by saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's blessings be on all of you. May Allah's grace be on all of you, and regardless and irrespective of whoever what is. But Allah Ta'ala is zameen ke sare bashindon par rahmat ki barish kare inshallah. Today is a very august occasion, a very important occasion, because in these few students are going to graduate from here and then get into the real world, faced with a different world altogether. It's not easy. It's not easy that we are faced with an amazing challenge in the world. I'm sure in your eyes there are a lot of dreams. माँ बाप के दिमाग में भी ये होगा कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची बड़ी होकर ये करेगा, वो करेगा, ऐसा बनेगा, ये होगा, वो होगा। मगर दोस्तों, एक बात अल्लाह की सच है, वो ये है कि सारा जमाना खसारे में। तुम डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो, whatever you become in this world, maybe you're the richest man, the whatever you are, maybe you're the scientist. अल्लाह ताला ने अपनी किताब में कसम खाई है, वल असर, जमाने की कसम, from the beginning to the end, no one is successful. Everybody has been a failure, whether he be a king or a queen or the rich man or the scholar. इल्ला लज़ीना आमनू, जो डॉक्टरी करते हैं मगर साथ में दूसरा काम भी करते हैं। We don't need those kind of doctors. We need honest doctors who are God-fearing and who have love and compassion and respect in their hearts. We should not be alone satisfied with numbers. We need to be satisfied with the kind of moral training that we are giving here. And therefore, let me recall my mother, who passed out physics, chemistry, and mathematics. She became a graduate like you are today, PCM graduate in 1950 from Mysore University, all the way then. And this woman at 18 got married and gave birth to 8 children, 7 of them boys, and out of them 5 became doctors with at least 4 degrees with them and another 2 with PhDs. So everybody became a doctor. Let me tell you this. And among them, her best friend sent her a book when she was pregnant with her first child. और वो किताब, मैं उसका ऑथर भूल रहा हूँ, उस किताब का नाम शाहीन था. My mom was so impressed with that book, Shaheen, she named her first son Zafar Ahmad Shaheen. And I'm telling you that Shaheen really became the Shaheen in our family. Really high-flying, really going up there. Shaheen कोई छोटी चीज नहीं है. आप जानते हैं, and I really want to share this fantastic poem, Nazm, that Allama Iqbal wrote. It might have been read 100 times, but I'm telling you, it has not been followed, sir. पढ़े जरूर हैं, मजा जरूर लिए हैं, मगर फॉलो बहुत कम किए हैं मेरे भाइयों और बहनों, and especially the graduating students of this batch of 2024 who are going out and stepping out of this campus. Please take anything. I mean, if you want to take one thing out of this, Shaheen Nazm Allama Iqbal ki zarur padhe. And I want to share a few verses of that with you here today. क्या मैंने उस खाकदान से किनारा जहां रिस्क का नाम है आबोदाना. As a Shaheenian graduate, we don't expect you to go and
पेट पालना हमारा काम हरगिज नहीं है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, पेट पालना अल्लाह का काम है। हम एक मकसद के पीछे जाएं, हम उस दुनिया से अलग हो जाएं जिस दुनिया में सैलरी कितनी, पैसे कितने, कार कौन सी, गाड़ी कौन सी, घर कौन सी, वॉच कौन सी, फोन कौन सा। Get away from that. शाहीन ऐसा काम नहीं करता है। I mean, we need to understand this. बयाबां की खलवत खुश आती है मुझे, अजल से है मेरी फितरत राहिबाना। आई डोंट लाइक द शो ऑफ द वर्ल्ड। मुझे मॉल में फिरना, पिक्चर देखना, मुझे कपड़े में बहुत पसंद, वो फैशन में, मेरे कॉस्मेटिक्स में, ये छोड़ो। मेरी फितरत राहिबाना है, इसीलिए मैं शाहीन हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड दैट इज वेयर द शाहीन फ्लाइज इंशाअल्लाह। फिर कहा, ना बादे बहारी, ना गुलचिन, ना बुलबुल, ना बीमारी ये नगमे आशिखाना। ये लव, ये रोमांस, अच्छा गाना, क्या मजा आता है, ये सब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि ना बीमारी है नगमे आशिखाना, ये जो बीमारी है लव की बीमारी साहब, ये मुझे ख्वाहिश, वो ख्वाहिश, ये चाहता वो चाहता, जरा लिपस्टिक कौन सा लगाना, ये बाल मेरे बरोबर नहीं, इतना बड़ा मिरर घर के अंदर, मर्दों के घरों के अंदर, ये एक बाल जरा लंबा हो गया, वो आजकल सैलून में जाकर ऐसा बालां कटा रही, ऐसा घंटे घंटे वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग क्या शाहीनियन बनेंगे? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, एंड दिस इज व्हाट अल्लामा इकबाल रोट। गोइंग अहेड, खयाबान से है परहेज लाजिम, अदाएं हैं इनकी बहुत दिलबराना। दीज आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव थिंग्स। अब देखिए, शाहीन अगर अब्दुल खदीर साहब करे हैं, ही इज गॉन बिहाइंड अ पैशन, ए मकसद। हमको ये काम करके रखना है, और ये अगर काम करके रखना है तो वो दुबई के चीज़ां, वो बेंगलुरु के बिल्डिंगा, वो अपार्टमेंटा, आई मीन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट। आई मीन वी नीड टू बी सिंपल, राहिबाना, ऑस्टियर, अंडरस्टैंड दिस एंड कीप योरसेल्फ क्लीन फ्रॉम दिस दुनिया। लेट मी टेल यू दिस, हवाए बयाबां से होती है कारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेजर्ट लाइफ बोले तो मुझे शाहीन की याद आती साहब। डेजर्ट लाइफ, इससे बनती है कारी, इससे बनते हैं डॉक्टर, इससे बनते हैं नीट में पास। यू नो, ये व्हाट डिड आई से, हवाए बयाबान से बनती है कारी, से होती है कारी, जवा मर्द की ज़रबते गाजियाना। दैट नीट का एग्जाम लिखना तो यहाँ ऐसा सुबह के 7:30 से रात के 10 बजे तक पढ़े तो छोटा सो आराम से कोई चीज हासिल नहीं होती है। इट इज हार्ड वर्क दैट विल गेट यू, बट अनफॉर्चुनेटली once you step out of this Shahinian thing, are you going to continue that 12 कितने घंटे, 14-hour week and 14-hour day? उन्हें कौन हमारे नारायण मूर्ति साहब बोलती हैं 70 hours a week। 70 hours a week में कुछ भी नहीं होता भाई। 70 hours में nothing। Multiply 14 into 7 कितने हो गए साहब? 9800 hours a week। ये होता है शाहीनियन ग्रेजुएट। जाओ नारायण मूर्ति, तुम 70 घंटे काम करो, हम शाहीनियन हैं 100 hours काम करेंगे। एंड दैट इज व्हाट शाहीन इज, एंड दैट इज व्हाट हार्ड वर्क इज। ये ग्रेजुएशन में इस तरह के अज़ाइम रखिए। फिर कहा, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना। ये चीजों के, ये दुनिया के चीजों से मैं उसके पीछे पड़ा नहीं हूं। मुझे एक मकसद है, मुझे जिंदगी में लोगों की खिदमत करना है, डॉक्टर बनकर उन गरीबों की। I'm telling you, the situation is so bad in the medical world. People are sick, and they साहब, एक tribalhealth.org बोलकर तमिलनाडु में एक 2 डॉक्टर्स ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है। I mean, you should go and look at what they have done in those villages. Villages में काम करने गवर्नमेंट को नहीं मिल रही लोग। Everybody wants to work in Khayaban, rather in the gardens,
इन द गार्डन सिटीज, बिदर में रहना चाह रहे हैं, जाकर खेड़े में रहना नहीं चाह रहे हैं। कैसे ये दुनिया बदलेगी अगर हमको इंसानों से मोहब्बत नहीं है बल्कि मालों से अगर मोहब्बत आ गई तो वी आर नॉट गोइंग टू विन दैट। एंड देयरफॉर द शाहीनियन स्टूडेंट शुड हैव दिस जाहिदाना अंदाज, austerity and this simplicity of personality that will reach us there. झपटना पलटना, झपट कर पलटना लहू गरम रखने के लिए है एक बहाना। एंड दैट इज द काइंड ऑफ एक्टिविज्म, मूवमेंट, हरकत में बरकत, हरकत में बरकत। चुप के बैठे रहना, क्या भी नहीं करना, नो, go out into the world, meet people, penetrate, ask them what is wrong with them, greet them well, send them assalamu alaikum, feed them, कुछ तो इंसानों के बनो। and that is where ये लहू गरम रहेगा, तकलीफों को देखेंगे, बुराइयों को देखेंगे और अज़ाइम बढ़ेंगे। and that is what we have graduated for. We have not graduated for money, we have not graduated for a degree, we have not graduated for an honor. honor तो अल्लाह के पास हमें जरूर मिलेगा जब हम इंसानों की बंदों का काम आएंगे। ना पूरब ना पश्चिम, चकोरों की दुनिया, मेरा नील गांव आसमान बेकिराना। See, many times we get हम बाउंड्री में आ जाते हैं। मैं बीए की ग्रेजुएट, मैं साइंस की ग्रेजुएट, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं बिदर वाला, मैं कर्नाटक वाला, मैं इंडिया वाला, मैं मुसलमान। ये क्या बाउंड्रीज हैं? इन बाउंड्रीज को तोड़ो और बाहर निकालो। मेरी दुनिया ये आसमान है which has no boundaries and my thinking is boundaryless. I am not only looking at these things but I'm looking big. बड़ा सोचने का ये है शाहीनियन थॉट, ये है 30,000 फीट का व्यू। यू नो, गो अप अबाव, प्लेन में जाएं कभी, दुनिया इतनी हीच नजर आती है और लोग सारी जिंदगी, एक 60-40 सेट नहीं मिलती साहब, पूरी जिंदगी काम करे तो वो 60-40 को अपनी जिंदगी लड़ा रहे हैं, ऊपर का विजन नहीं है। ये दुनिया क्या चीज है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। And therefore, let us become high thinkers like Shahinians should be. परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। I was just asking our Dr. Abdul Khadir साहब, अभी मैं पूछ रहा था, I have at least one thing common with you, sir. One thing common with you. I also don't own a house. मेरे पास, मैं भी किराए के घर पे हूं, डॉक्टर साहब किराए पे घर पे तो नहीं है, मगर अब तक घर नहीं बनाए। मुझे बहुत खुशी हुई, इससे इंतहाई खुशी हुई कि पहले ग्रैंड महल नहीं बनाए, पहले ग्रैंड स्कूल आप लोगों के लिए बनाए, पहले ग्रैंड हॉस्टल बनाए, बाद में घर छोड़ो साहब, कहाँ भी जमीन पर भी जी लिया जाए, कहाँ भी सोए जाना, क्या मुश्किल है उसके अंदर। एंड दैट इज द शाहीनियन आइडेंटिटी दैट वी नीड टू डील विद एंड गो अहेड। फ्रेंड्स, वी हैव अ वेरी ऑगस्ट गैदरिंग टुडे. The world is full of advice and I don't want to take too much of your time. I want to say 6 things that the biggest guru in the world, the best of the best, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gave an advice to his most beloved sahabi Hazrat Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Abu Zar से जाकर Hazrat Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu ने, he went and asked the Prophet, मुझे नसीहत कीजिए, tell me something that will be useful to my life. You know what he said? First advice ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ BA BSc ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ದೇವರ ಭಯ ಇಟ್ಕೋ. ದೇವರ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ. ದೇವರ ಭಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ತಖ್ವಾ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಾಡ್ ಫಿಯರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಖಶಿಯತ್, and it should be that. And when a man has God fearing in him, every action of his becomes beautiful. हर काम जो करोगे, हर डिग्री जो करोगे, खूबसूरत बन जाता है, ब्यूटीफुल होता है अगर खुदा का डर हो. हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, और जरा नसीहत कीजिए, गिव मी सम मोर एडवाइस. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
कुरान की तिलावत और अल्लाह अज़्ज़ व जल की जिक्र। दोस्तों, I'm sure being in Shaheen, you've learned some wonderful du'as. Wonderful du'as that you need to know morning and evening. Allahumma anta rabbi. Ay Allah, oh my Lord, you are my creator and sustainer. Khalaqtani wa ana abduka, and I am your slave. See, as you walk with all these degrees in this world, with all the money, आदमी को अकड़ आ जाता है. In my opinion, और रे तुझे ओपिनियन कब से आया बा? तू बहुत बड़ा आदमी बन गया ना, डॉक्टर बन को, इंजीनियर बन को, इतनी अकल है. इन माई ओपिनियन आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस, एंड आई डोंट अग्री विथ यू. अंत रब्बी खलक़तनी व अना अब्दुका, आई एम अ स्लेव ऑफ यू ओ लॉर्ड. मेरा ज्यादा बोलना नहीं है. وَأَنَا عَلَىٰ أَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. Every day remember that you have a contract with Allah subhanahu wa ta'ala. You have a contract with your creator that you shall not lie, that you shall lead a useful life, that you shall serve your parents, that you shall serve the poor. And I have a contract with my Lord. My contract is not only with me, my wife, my children. हमारे एक दोस्त बोलते हैं MBBS बोले तो मैं, बीवी, बच्चे सलामत वतच लाइफ में. I mean, that is not it. I have a contract with my God, with my creator, that I'm going to be nice to my parents. I'm going to be nice to my neighbors. I'm going to be nice to this country for God's sake. Let us do something. And हम बोल रहे हैं रोजाना, ये जिक्रुल्लाह है, अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु. I mean, you are aware that you have screwed up things in life. This introspection is this inside looking to see that I have erred. मैं गलती किया हूं. One of the greatest problems in life is guilt that we have in our hearts. Our guilt-laden heavy hearts. इससे कैसा निकलना मालूम नहीं है लोगों को, and they are getting depressed, परेशान, हैरान. Half the medical practice for the doctors who are here is about म्हणजे हौल धड़के की बीमारी. कैसी? हौल धड़का. वो हौल धड़के को इंग्लिश में क्या बोलना मुझे अब तक नहीं मालूम. हौल और धड़का तो मैं मेडिकल में लिखता हूं कंप्लेंट्स ऑफ हौल धड़का चक्कर घबराहट. हौल धड़का चक्कर घबराहट, ये इस बीमारी का नाम है जो इतने गुनाह कर दिया है और दिल ऐसा काला हो चुका है, उसको कभी एहसास नहीं हुआ. ऑल इट रिक्वायर्स इज गो टू योर क्रिएटर एंड से सॉरी एंड आई विल नॉट डू इट अगेन. ये जिक्र है, ये फिक्र है, ये इस्तग़फ़ार है, ये शुक्र है. एंड ये जिक्र के बगैर, ये तिलावत कुरान के बगैर, दोस्तों, वो मुअज़्ज़िज़ थे दुनिया में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिक़ कुरान होकर. There is no book which gives you light, which gives you roshni, which gives you jyoti, which gives you peace of mind like the Quran. We have spent our time reading BA, BSc, MBBS, MD and all this. और अल्लाह ने जो किताब दिया इंसानों को उठाने के लिए, उस किताब से हम दूर हो गए. Let us make this decision today as we go out, and a lifelong commitment कि अल्लाह ताला की किताब को हम जरूर पढ़ेंगे और बेहतरीन पढ़ेंगे. All right, this is the second advice that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave Hazrat Abu Zar. पहली क्या थी? तक़वा. दूसरा क्या? तिलावत कुरान और जिक्रुल्लाह. Number 3, he said, और जरा नसीहत करो. Give me something more. So he said a third point. तीसरा point क्या बोले मालूम? Prolonged silence. Keep quiet. ज्यादा बातें मत करो, खामोश रहो. खामोशी से एक तो मुसीबत से बचती. पूछो मिनिस्टर्स हैं, one of the first thing they learn if you want to be in public life, if you talk too much you will get into deep trouble. And therefore एक तो दोस्तियां सब इंटैक्ट रखना, तो कम बातें करना. तुम जो भी बनो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस है, मेरी क्या भी नहीं है. Prolonged silence. Silence will help you meet yourself. ये बड़ी अजीब चीज है. It will help you meet your own self. ये मिरर में तो हमें देख लेती हैं अपने आप को,
उससे अपने आप से मुलाकात नहीं कर सकते. See, when you talk to yourself in your loneliness, in a meditated time, and when you think, where am I going? What did I do wrong? Should I do this? Should I not do this? When you are in deep thought and with khashiyatullah अंदर, अल्लाह इल्हाम करेगा, ऐसे बातें दिमाग में डालेगा जिससे इंसान कामयाबी की तरफ चलेगा. You will make your decisions well. What is the secret? Keep quiet. Don't talk too much. Think, tafakkur, tadabbur, learn. And that thinking ability comes when you are silent. अल्लाह की नुसरत इसी तरह आती है. देखिए हम कहते हैं ना, ऐ अल्लाह मदद कर, अल्लाह मदद कर, अल्लाह रे करके कोई पुकारा करते हैं, अल्लाह बोला करते हैं, हाथ हला रे बोला करते हैं. I mean, work hard, do something. However, the reality is the best way Allah helps us. क्या खदीर साहब, कब तभी ऐसे आइडियाज डाल देता, कैसे आइडियाज डाल देता. देखिए ये जो आइडियाज आए हैं जिससे इतना बड़ा शाहीन बना है, ये अल्लाह का फजल है जो आपको आइडियाज मिले, वरना ये आइडियाज खामोश नहीं आते. खदीर साहब खामोश रहते हैं इसीलिए आइडियाज आते हैं. आप भी खामोश रहो, बहुत सारे आइडियाज आएंगे इंशाअल्लाह. तो फिर हजरत अबू जर ने कहा, और जरा एडवाइस दो ना सब, और जरा एडवाइस दीजिए. चौथी एडवाइस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज्यादा हंसो मत. डोंट लाफ टू मच. डोंट बी इन अ वर्ल्ड, किसी का हंसी ठट्टा, रिडिक्यूल, इंसल्ट, खूब मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं. डोंट लाफ टू मच. लाइफ इज अ सीरियस मैटर. लाइफ इज अ सीरियस मैटर. ये हंसी मजाक उड़ाने, लाइफ इज नॉट टू एंजॉय. जस्ट डू इट, बी हैप्पी, एंजॉय ಮಾಡಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. वी हैव कम, दिस इज एन एग्जामिनेशन. ये एक टेस्ट है ये दुनिया, इसके अंदर सीरियस रहें, अपने टाइम का हिसाब रखें. वक्त का जवाब देना पड़ेगा, पैसे का जवाब देना पड़ेगा. इसीलिए कहा, अगर तुम ज्यादा हंसोगे तो दिल सख्त हो जाएगा, आपके चेहरे का नूर निकल जाएगा. स्टे सीरियस, डोंट बी इन टू मच ऑफ लाफ्टर ऑल द टाइम. फिर दिल नहीं भरा हजरत अबू जर का, आपने फरमाया और कुछ बताइए. कहा कि इवन इफ इट इज बिटर, स्पीक द ट्रूथ. सच्ची बात कहो, इवन इफ इट इज नॉट ट्रू. और आखिरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात जो कहा हजरत अबू जर से कहा, नेवर गेट स्कैर्ड ऑफ क्रिटिसिज्म, नेवर गेट स्कैर्ड ऑफ थ्रेट्स. ऐसा करे तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करे तो ऐसा हो जाता है. हमारे अम्मी 1965 में, by the way, my father was an engineering graduate in 1945 and my mother was a physics graduate in 1950. And what did they do? They sent their children to a madrasa all the way in Rampur. रहते थे मैसूर के खेड़े संते बन्नूर, मल्ले बन्नूर में रहते थे. वहां से मैसूर जाना, मैसूर से बेंगलुरु आना, बेंगलुरु से चेन्नई जाना, चेन्नई से दिल्ली जाना, दिल्ली से रामपुर जाना. 1965 में छोटे थे, 2 बच्चे. लोगों ने कहा, हाल कर डाली तेरे बच्चों को, बर्बाद कर डाली तेरे बच्चों को. आज today he runs 5 schools in America. He runs 5 schools in America and he has some 2,000 children in America. He is a professor, he is a PhD, he is everything. And the second fellow is a professor in a MBA college in a university in America. गए मदरसे को, क्या बोले लोग, हाल कर डाली बच्चों को, बर्बाद कर दी तुमने. मगर इन चीजों से डरो नहीं. People will threaten you, people will pull your thing, people will criticize you. मालूम है ना वो इसका वाकया, एक फार्मर और उसका बच्चा एक गद्दे को लेके मार्केट को जा रहे थे. लोगों ने कहा, क्या जी चल्ले को जा रही, घोड़े पे बैठो ना, गद्दे पे भी चल रही, तुम्हें भी चल रही. फिर उन्होंने कहा, एक बच्चे को बिठाया, कहा कैसा बच्चा है, बाप को बैठना चाहिए, बच्चे को चला रहा है ना. फिर उसने कहा कि ठीक है बेटा. बच्चा उतर गया, बाप चढ़ गया. फिर कहा कि कैसा बाप है, बच्चे को चला रहा है. लोग कहते रहेंगे जो कुछ कहना है, फाइनल उनका अंजाम यह होता है कि दोनों मिलकर गद्दे को सर पे बिठा के चलते हैं. What kind of idiocy this is? Be sure of yourself, be certain of every step you take. दोस्तों, कामयाबी अल्लाह ही की तरफ से आती है. दिल इखलास का हो, लोगों की मदद और
उनके ऊपर रहमत बनने की बात हो। अभी कुरान के आयात पढ़े, अर्रहमान अर्रहमान, और ये कि फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो रहमदिल, वो रहमान जहां से सब रहमत निकलती है, हम भी वैसे बने इस धरती के लिए। लेट अस बिकम a message of mercy to mankind. Let us become somebody who is not forgetful. किन किन नेमतों को हमने झुटलाया, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला इन शाहीनियन ग्रेजुएट्स को शाइनिंग डायमंड्स बना दिए, ताकि दुनिया के अंदर छाकर एक ऐसी फोर्स बने जिससे दुनिया के अंदर अमन कायम हो, दुनिया के अंदर इंसाफ कायम हो, दुनिया के अंदर भूखमरी मिट जाए, दुनिया के अंदर गुर्बत चले जाए और इंसान फिर से डिग्निटी के साथ जीने वाला बन जाए। दोस्तों, ये होता है मकसद, ये होता है शाहीन ग्रेजुएट। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर लिसनिंग टू मी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।